I think I'll tell you what is missing. Who makes the rules of the Supreme Court? Rules and procedures. नहीं वो जरा provision पढ़ लेते हैं. Article 190. Because we've just done all this exercise in another case. Article 191, sir. Subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया ना. आप लिया है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023. किसने किया? पार्लियामेंट ने कर दिया. अब आप आ जाइए आर्टिकल 202 पे. इसलिए मैं बहुत मोहतात हूँ कि मैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी चाहता हूँ, तो ये मैं नहीं चाहता हूँ इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट prevails over the high court. अब आप 202 और 203 भी पढ़ लें. Subject to the Constitution and law, a high court may make rules regulating the practice and procedure of the court or of any court subordinate to it. ठीक है, ये उनका काम है. अच्छा, अगर वो ना करें, पार्लियामान कर सकती है, बलूचिस्तान की पार्लियामान कर सकती है, सिंध की पार्लियामान कर सकती है, बाकी सूबों की कर सकती है. अब आप पढ़िए जस्टिस याया अफरीदी का नोट. मैं जरा इसमें एक देखें, लर्नड अटॉर्नी जनरल पहले पढ़ने से पहले ये इशू डिफरेंट है. आपने खुद एक्नॉलेज कर दिया कि 2017 में आपकी हुकूमत थी. आपके हुकूमत में होते हुए जो आप ही के एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स थे वो आपके खिलाफ लगे हुए थे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने. This is the issue. I think let's keep politics out. This is the issue. It's not politics, it's reality. The reality is, there is no civilian supremacy. And there has never been a civilian supremacy. I think the Constitution is merely a piece of paper. देखिए, इंटरनल सिस्टम मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ बनाने को कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इस पीरियड में आया. ये 2 साल पहले आता तो स्ट्राइक डाउन हो जाना था. क्या कर लेना था पार्लियामेंट ने? देखें, ये चेंज होते रहते हैं. हमारे पास आया, हमारा व्यू ये था. आज से 2 साल पहले लाते तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वुड हैव बीन स्ट्रक डाउन. सो पार्लियामेंट कैन नॉट डू एवरीथिंग. जो हम समझ रहे हैं कर सकता है, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग, बट there could be, so we need to have our own internal mechanism. All I'm saying is let's talk about judiciary, let's not talk about others. हम अपने तो सिस्टम को एम्पावर कर लेना कि हमारा मतलब, आप मुझे बताएं सिविल जज कभी चिट्ठी लिख सकता है चीफ जस्टिस को कि जी मुझे थ्रेट आई थी? तो फिर कौन उसको एम्पावर करेगा? आपको देना कौन एम्पावर करेगा? हम नहीं करेंगे. वो सब कहते हैं कि जी वो कर सकता है. अगर मैं अटॉर्नी जनरल होता पाकिस्तान का तो मेरा जवाब ये होता, अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आपके चीफ जस्टिस को खत नहीं लिख सकती तो कसूर मेरा नहीं है, आपका कसूर है. तो हम इसीलिए तो ठीक करना चाह रहे हैं. तो आप कर लें ठीक पर. नहीं, देखिए, हम आप पे हर चीज नहीं डालें, हम आप पे नहीं डालें. अगर ऐसा कल्चर ऑफ डोमिनेयरिंग हो गया, ये आपका कसूर नहीं है, ये फिर हमारा कसूर है. हमें इसको एक बात मिसिंग जो हम मिस कर रहे हैं. एक बात, हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, पॉलिटिक्स भी याद हुआ. हम पॉलिटिशियंस को क्यों भूल गए कि पॉलिटिशियंस अगर अपने आप को सुधार लें, वो पॉलिटिक्स को थ्रू कोर्ट्स इंटरफेयर मैनेज ना करें, तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे. देखिए, किसी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए तो हमें इंटरफेयर नहीं करता. नेशनली फॉर पॉलिटिक्स टू कंट्रोल पॉलिटिक्स, अपने मर्जी के लोग, ये सारी चीजें पॉलिटिशियंस को साथ खड़ा होना पड़ेगा. हम सबको इस कोर्ट में जितने लोग बैठे हैं, शायद मेरे ख्याल कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इंडिपेंडेंस के एक्ट में नहीं होगा. लेकिन किस तरह होगा, सबको मिलकर लेके चलना होगा. पार्लियामेंटेरियंस को इस स्टेज पे उनको भी खड़ा होना चाहिए. अटॉर्नी जनरल साहब, बातें करना आसान है. स्टेट जब एग्रेसिव हो जाए, स्टेट के पावरफुल ऑर्गन्स जब एग्रेसिव हो जाए, citizens cannot fight them. Please try to understand that's the issue. A judge, you can't expect from a high court judge or a chief justice कि वो on his own उठेगा. It's an institutional response that has to come. उठे भी हैं. मैं एंडोर्स करता हूँ. उठे हैं. मैं सपोर्ट कर रहा हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं. इस बड़े वो जस्टिस याया का जी जस्टिस याया का नोट पैराग्राफ 4 से पढ़ लें, because that's also view of this honorable member of this court. It's not a simple recusal. जी पूरा ही पढ़ दूं या 4 से पढ़ूं? 4 से पढ़ लें, वो तो हिस्ट्री देते हैं. One must also not ignore that the high courts under the Constitution are independent establishments envisaged to regulate not only their administrative functions but also provide security to and safeguard judicial officers in their discharge of judicial functions. Law on the matter is already in the field.
The inaction on the part of the Chief Justice or judges of the High Court not to exercise the jurisdiction and powers vested in impose the exercise of its jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution. This may affect the functioning of the worthy Chief Justices and worthy judges of the High Courts and would, to my mind, amount to interference in the independence of the High Courts. دیکھیں یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی ہم مد نظر رکھیں نا. جسٹ بیکاز ہی از ناٹ سٹنگ ٹوڈے ہیئر, ہی از اسٹل اسپیکنگ. He has spoken. Mr. Attorney General, دیکھیں, with great respect to this view, of course this is a view and we wait, of course it's from our colleague. سوال یہ ہے کہ آپ کے سارے جواب ہائی کورٹس کے آ گئے, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نہیں کہہ رہے کہ کچھ پلیز وی لوکنگ اپ ٹو یو, کچھ کرو. نہیں سارے نہیں, سب کہہ رہے ہیں, نہیں کہہ رہے. چلیں پڑھ لیتے ہیں. آپ دیکھیں, اگر ہم یہ چلیں آج ہم یہ زیوم کر لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کو بند کرو جی, یہ کیا ہے, ہائی کورٹ کرے خود ہی جو کرتا ہے, اینڈ وی کین ریپ اپ دا کیس ٹوڈے. ہم کہتے ہیں چلیں ہائی کورٹ اپنا کام کریں, آپ لوگوں کو اپنا پتہ ہے, خود کرو, تو we can close the case today. Why are we sitting? If we are sitting, we are sitting to develop a system. No. I think there it's not black and white. It's a question. We should be careful on what we write. We should not undermine the high courts. Yes, we can. Empowerment is something else, but we should not take upon what the Constitution gives the power to the high court. It has given it powers under 202, 203 that we should keep in mind. That doesn't mean that we should wrap up the case. Just like the practice and procedure came, if one party doesn't do, there's someone else who can do it. That is called the legislature. That can also be done. I mean, it's not that what do you do, like if the Chief Justice doesn't do it or things like that. It has to be a full court. The rules are made by the full court. Let's not encroach and make the High Court subordinate courts to the Supreme Court. The subordinate courts are defined, are the district courts to the High Court. We do not have that relationship with the High Court. The High Court are independent courts. Tomorrow we'll be accused that a Chief Justice or a particular number of judges have subordinated all the high courts to the Supreme Court, which will be the very wrong message, which at least should not go from this forum. This doesn't mean that we are not attending to this matter with the seriousness that it deserves. Now can we proceed to the next? If we finish with this, could I just add a little thing to this, that we are not sitting in the administrative capacity here, that we have no power over the judiciary. As a Supreme Court on the judicial side, we can pass any order to anybody. 189 کا کوئی principle within the parameters of the Constitution. لرنڈ اٹارنی جنرل, آپ نے 3 ہائی کورٹس کا پڑھ لیا, باقی بھی پڑھنے. کسی ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ انٹرفیئرنس نہیں ہے. اب بات یہ ہے جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, وہ ہائی کورٹس خود لاؤڈلی ہمیں کہہ رہی ہیں کہ دیر از انٹرفیئرنس, وی آر فیسنگ دیز چیلنجز, this institution needs to respond. That is all that they are saying. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, کسی ہائی کورٹ نے کہا کہ سر بڑی مہربانی آپ مت کریں, ہم کر لیں گے خود ہی. کہا کسی یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو آپس میں ذرا تھوڑا سا زیادہ کرنا پڑے گا, میں تو آپ کے ساتھ. یہ ایڈیشن ہے, آپس میں نہیں ایڈیشن ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ججز نے ایسا کیوں کیا باوجود اس کے کہ کانسٹیٹیوشنلی دے آر انڈیپینڈنٹ. ہم سب ہائی کورٹ سے آئے, ہم سب ہائی کورٹ سے آئے. ہم اگر ہم سچ کی بات کرتے ہیں, سچ تو یہ ہے کہ جب ہم ہائی کورٹ میں ہوتے تھے تو اوپر ہم سمجھتے تھے سپریم کورٹ کا ڈنڈا ہے, ہم محتاط ہوتے تھے, ڈرتے تھے. صاف بات ہے. سچ کا اگر کہنا ہے تو سچ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا انڈائریکٹ اثر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ڈر خوف ہوتا ہے. اسپیشلی جب شوکت صدیقہ کے کیس آیا تو سارے ججز کو ختم کر دیا. یہ تو اللہ کی مہربانی ہوئی کہ واپس بحال ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے, یہ خوف بھی ختم کرنا ہے ہائی کورٹ کا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز نے یہ بتانا ہے کہ آپ آزاد ہو, ہماری طرف سے کوئی بات آ بھی جائے تو اپنا مانے. اور یہ اصل بات بتا. اور اٹارنی جنرل زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب سپریم کورٹ سے انڈائریکٹ میسیجز آتے ہیں, لیکن ججز کو اپنے اوتھ کے تحت فیئرلیس ہونا چاہیے. And this also has happened in the past. That will also put in the system that they should be fearless, they should take action, of course, on their own. اگر let's proceed further. اب کون سا پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ میں اب ان کی 2 سجیشنز تھی کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے, پیج 5 پہ ٹورڈز دی اینڈ. سو دے پشاور نے, سو انہوں نے کہا کہ ایک آرٹیکل 4 انسرٹ ہو کوڈ آف کنڈکٹ میں. I'll read that out and then I'll move to سندھ ہائی کورٹ اینڈ بلوچستان آخر میں.
If a judge of the High Court, देखिए you may call me anything. I would consider myself as a constitutionalist in the sense I don't like to. I'll tell you what my concern is. The minute you talk about Supreme Judicial Council, I don't want to hear anything. वजह बता दूं, वो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें 5 मेंबरान हैं. अगर किसी को कोई अच्छा मशवरा देना है उनको एक चिट्ठी लिख दे. मैं एक मेंबर हूं, दूसरे मेंबर मेरे साथ बैठे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और 2 सीनियर चीफ जस्टिसेस हैं. हमें अभी उसमें हमें अमेंडमेंट की है. तो सुप्रीम कोर्ट के ताबे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है, वो आईनी इदारा सेपरेट है. तो बहुत अच्छा मशवरा है. अगर हम इधर ले आएंगे वो कहीं ये ना समझ जाए इंप्रेशन कि सुप्रीम कोर्ट के मातहत इदारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है. क्योंकि सुनिए ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेरे खिलाफ भी चल सकता है, शाह साहब के खिलाफ भी जा सकता है. ठीक है, वो इंडिपेंडेंट इदारा है. हम तो ये बातें तजवीज़ अगर उनको देना है वो जाएगी स्ट्रेट अवे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि आप अपने रूल्स बदल दें. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.